Are you confused that dark eyebrows, or if you do permanent eyebrows, will it look good on you or not? I am going to answer you for that. Hi, my name is Dr. Garima Verma from Aaura Aesthetic. I am here to review today Mina eyebrows, which is very popular right now, and it is a 7-day henna kind of tint. And if you are in somebody that who really want to see that how dark eyebrows will look on you, this is the video for you, because you can determine that whether you want those dark eyebrows or not. It is in the middle of your natural eyebrows to your permanent microblading or nano blading. At Aura Aesthetic, we do a lot of permanent eyebrow procedures, other permanent makeup procedures. But there is always a question in everybody's mind whether it will look good or not. And they end up saying only one expectation, natural to lagega na. The items which we have received in this kit is this Mina eyebrow. I have ordered a dark brown henna which lasts for 7 days. इसके अंदर ये पैकेट था जिसमें से मैंने काट के ऑलरेडी निकाला है, तो ये पाउच है, ठीक है. देन वी हैव अ स्मॉल एंगल्ड ब्रश लाइक दिस. उसके बाद एक ड्रॉपर है, देर इज अ स्मॉल स्पून, मिक्सिंग पैलेट है यहाँ पे, एंड देन दे हैव गिवन 3-4 eyebrow shaping stencils as well, and a good amount of written matter for all the instructions. So इसमें 12 colors आते हैं, and I have ordered this from the website at ₹499. For one person, the instructions were that take a half spoon and add 1 ml of water, which was marked in the dropper as well, or 10 to 12 drops. Mix it well. Earlier in starting, it will be very liquid, but then you can keep on mixing it. It will become little thick. Once the color starts coming up, that's the time you have to apply it. It has become very thick actually now, और ये बहुत dark भी हो गया है. I have chosen dark brown color, the second shade, although my hair are exactly black. So I'm using a wet wipe to remove it, and अब मैं यहाँ से remove कर रही हूँ. So इसमें actually पेपर में भी लिखा हुआ है कि आप 3 बार रीअप्लाई कर सकते हैं. So अगर आपको पैच टेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पैच टेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी, तो आप जो है, so now you can see कि second time में भी it has really given me a good pigment, which I'm happy about. Can you see? है ना? Similarly, let's see on the other side. Let me do some focus. Yes, so मैंने यहाँ पे एक्चुअली फिर से लगाया क्योंकि यहीं पे मुझे स्कार मार्क है, और यस एब्सोल्युटली कलर तो आ गया है. बट देन दिस इज ओनली 7-day पिगमेंट विच गिव्स यू अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंक. एंड अगर आपके पास इतना टाइम है कि हर 7 दिन में आप यूज़ करना चाहो इसको, तो वो भी कर सकते हो, या आपको पेंसिल फिलिंग की आदत है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. ऑल्दो उतना पिगमेंट इस पर अभी भी नहीं आया है स्कार पे, बट अगर हम दूर से देखें तो वो एक जो अलग से बहुत ज़्यादा दिखाई देता था मेरा चोट, सो कुछ अमाउंट ऑफ पिगमेंट तो आ चुका है. इट इज़ डेफिनेटली वर्किंग. इफ़ आई कैन शो यू, बिकॉज मैंने यहाँ पे लगाया था एंड यू कैन सी योर टिंट इज देयर. मैंने एक्चुअली सेकेंड टाइम मेरे जो यहाँ पे कट था, मुझे लगा उस पर रंग थोड़ा कम चढ़ा था, एंड आई वांटेड इट डार्क बिकॉज मेरी यहाँ आईब्रोज बहुत डार्क हैं, तो मैंने सेकेंड टाइम एक्चुअली लगाया यहाँ और यहाँ, इवन इस एज पे भी. बट फर्स्ट टाइम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पिगमेंट यहाँ पे आ चुका है, एज यू कैन सी कि एक बॉक्स फॉर्मेशन जैसा दिख रहा है. So that's all from my side for the video. I'll give it 3.5, I think. Yes, because for me it was okay, it was good. But somebody who do not have eyebrows at all और बहुत ही कम है and they want to try this, I think जो हमारा actually आज का motive था, that is solved. It is giving the color. Although eyes पे मुझे थोड़ा सा heaviness feel हो रही है, I don't know why, but मुझे कुछ भी एलर्जी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर एक्चुअली ट्राइंग समथिंग न्यू ऑन ऑरा एस्थेटिक, ऑफ रिव्यूइंग समथिंग विच इज बेसिकली regarding aesthetic, and me being a doctor, doing this is something new which we are bringing in at Aura Aesthetic. So let me know if you want me to do any other kind of reviews especially, and it might be helpful for you. You can comment down below.